So if we are given this kind of differential equation, the left-hand side can be written as a differential of this function. Now, you can see that if we take the differential of this thing, it is equal to what? It is partial f over partial x. First, we take the partial derivative of this thing with respect to x, which is 2x minus 5y times dx plus, again, partial f over partial y of this thing is minus 5x plus 2y squared dy. Now, so this function must be, if we put it equal to a constant, then this function must be the solution of the given differential equation. So this is the idea behind solving exact differential equation. We need to find this function. We need to find this function f of x, y. If we can find this function, we just have to put it equal to some constant, and this will be the solution of the given differential equation. Now the question is how to find this function f of x, y. I hope you get it. If you have any question, you can ask me. Let me admit the people who are trying to join in. If you have any question, you can ask me. Otherwise, let me tell you what is the procedure of finding this kind of function. Now, how to find f of x, y? For that, we need to discuss this theorem. It's basically criteria. It's criterion for an exact differential. This thing. The theorem says that let m of xy and n of xy be continuous and have continuous first order derivative. First order, in fact, partial derivatives, because the function would be the function of two variables. In a rectangle, rectangular region, you can say that. Region R, where R region is basically defined by x, y, such that x is greater than a less than b, and y is greater than c less than d. So what kind of this rectangular region is कि आपका x जो है वो a और b के दरमियान है और y is some c and d. So this will be your rectangular region where x and y are, these functions are defined, they are continuous, and their partial derivatives are also continuous. Then a necessary and sufficient condition
that m of xy dx plus n of xy dy be an exact differential of some function, you can say that, of some function f of xy if 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 partial m over partial y is equal to partial n over partial x. So this is the criteria for this kind of equation. If we have an equation m of xy dx plus n of xy dy equal to 0, then the left hand side will definitely be a differential of some function if partial m over partial y is equal to partial n over partial x. So why is it so? If we look at the proof of this thing, this theorem, it says that अगर आप इस इक्वेशन को आपके पास ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसको आप कंपेयर करें f of x y is equal to c तो फंक्शन है इसका डिफरेंशियल क्या होगा df will be what partial f over partial x dx plus partial f over partial y dy equal to 0. ठीक है अब अगर हम if we compare these two things, अगर आप इसको इक्वेशन 1 कह दें ठीक है और इसको इक्वेशन 2 कह दें ठीक है on comparison what do we get here? We get partial f over partial x is equal to dx का कोफिशिएंट यहाँ पे partial f over partial x है यहाँ पे dx का कोफिशिएंट m of xy है so we get what it is m and dy का कोफिशिएंट यहाँ पे partial f over partial y है dy का कोफिशिएंट यहाँ पे n है so partial f over partial y is equal to what n. Remember these two equations, these are very important equations when we see that how to find f of x, y, we use these two equations. Now, if we take the partial derivative of this thing with respect to y and partial derivative of this thing with respect to x, ठीक है आप इसको कह दें this is your equation 3 and this is your equation 4. ठीक है यहाँ पे अगर हम इसका partial derivative लें with respect to y, so it becomes partial square f over partial y partial x is equal to partial m over partial y. ठीक है और इसका derivative लें with respect to x तो आपके पास क्या आ जाएगा partial square f over partial x partial y is equal to partial n over partial x. अब आप देखिए यहाँ पे ये दो इक्वेशंस हैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड देखें इस ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड्स दे मस्ट बी इक्वल व्हेन f this function f of xy or these functions m and n if they have continuous first order partial derivatives then these two equations the left hand side of these two equations are equal. If the left hand sides are equal then right hand sides must be equal. तो ये क्या आ जाएगा इसके इक्वल आ जाएगा means partial m over partial y should be equal to partial n over partial x, which was basically the criteria here which we discussed in that theorem.
Now, for this equation, if this condition holds, partial derivative of n with respect to y and partial derivative of n with respect to x, if these two expressions are equal, then the exact differential of this left-hand side must exist. Means there exists some function f of x y whose differential will be this function. Now, how to find this function? How to find this function? Let's discuss this with the help of examples. We, we, I we, have a question. we will use these two equations. Yes, someone has a question? सर ये जो आपने अभी लास्ट चीज लिखी है कि पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ m विद रिस्पेक्ट टू y और इज इक्वल टू पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ n विद रिस्पेक्ट टू x, इसके अंदर ऊपर आपने कहा था इनकी लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं, ये जो डबल डेरिवेटिव्स हैं. जी जी. तो सर डिनोमिनेटर में द ऑर्डर डजंट मैटर इफ वी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y फर्स्ट और विद रिस्पेक्ट टू x फर्स्ट, उससे फर्क नहीं पड़ता? उससे फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ पे. ठीक है, पहले आप रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव ले लें या वाई ले लें. अगर फंक्शन कॉन्टिन्यूस है या आप m और n जो हैं इनके फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव्स कॉन्टिन्यूस हैं, तो इट डजंट मैटर कि आप पहले रिस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव लें या पहले रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव लें. दीज टू थिंग्स आर सेम. अगर ये But this लेफ्ट is साइड not सेम. जी जी. But this is not the case for all differential equations के आप के it remains the same, आप चाहे जो मर्जी करो, like पहले जो मर्जी करो. In general, it doesn't hold, but the criteria for this to hold is that this function should be continuous in that rectangular region R, जो कि हमने ऊपर define किया था यहाँ पे. Okay? यहाँ पे देखें criteria given है ना. If these two functions m of xy and n of xy be continuous and have continuous first order derivatives, partial derivatives in that rectangular region, okay, then a necessary and sufficient condition that this expression will be an exact differential of some function f of xy. If, what is the criteria now? Criteria is that कि अगर आपके पास partial m और partial y equal है partial n और partial x के, then the left hand side of that equation will be an exact differential. Will be an exact differential means there exists some function f of xy whose differential is the left hand side of this differential, this differential equation. Okay, so it means कि ये आपके पास जो function होगा ये it must be continuous on that rectangular region. अगर ये continuous होगा तो आप इसके derivative, second derivative particularly, पहले with respect to x derivative लें, बाद में respect to y या पहले respect to y बाद में respect to x लें, it doesn't matter, they both must be same. अगर लेफ्ट हैंड साइड्स इक्वल हैं तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होंगी. राइट हैंड साइड इक्वल है तो आपके पास ये वही एक्सप्रेशन आ जाएगा, which is the criteria to know whether the given differential equation is exact differential equation or not. ठीक है, so कोई भी differential equation इस टाइप की, इसको हम exact differential equation कहेंगे अगर this differential equation satisfies this criteria. ठीक है, अगर ये इस क्राइटेरिया को सेटिस्फाई करती है, then there must exist some function f of x y, ठीक है, whose differential is the left hand side. अगर ये फंक्शन एग्जिस्ट करता है जिसकी डिफरेंशियल लेफ्ट हैंड साइड है, तो आप दोनों साइड को इंटीग्रेट करेंगे, इसका डिफरेंशियल खत्म हो जाएगा, राइट हैंड साइड पे जीरो को इंटीग्रल सी आ जाएगा. तो यू गेट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन. In fact, this is the technique here. Now the question is how to find this function. How to find this function, particularly f of x y. In order to find this function, we use these two equations. Now we know that partial f over partial x is equal to m, where m is a known function. We can see the value of m here from the given differential equation. Similarly, n is a known function which can be written from the given differential equation.
we put partial f over partial x equal to n and partial f over partial y is equal to n, and then integrating here, if we integrate this function both sides with respect to x, डेरिवेटिव कैंसिल हो जाएगा, we get f. और राइट हैंड साइड पे आपके पास जो फंक्शन होगा m of x y, इसको हम इंटीग्रेट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू x. There are some little technical details in calculating f of x y, which we are going to discuss with the help of example. Let me explain this thing to you with the help of an example. जैसे कि अभी हमने पहले वो उसकी पहले एग्जांपल लिखी थी. Let's take the same example. अगर आपके पास show that the ODE, which is given by part 2xy dx plus x square minus y dy is equal to 0, is an exact ODE. Exact ODE या exact equation. Now we need to prove that this equation is exact equation. आपके पास यहाँ पे what is this thing? This is your m of xy. m of xy हमेशा dx का कोफिशिएंट होगा. Remember this. It is 2xy, and n of xy should be the coefficient of dy. And what is the value of this thing? It is x square minus 1. Now we check partial m over partial y. What is your partial m over partial y? y का जब डेरिवेटिव लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव इसका, तो x कांस्टेंट होगा. तो यहाँ पे 2x into 1. तो ये क्या आ गया आपके पास 2x. Similarly, now we take the partial derivative of n with respect to x. So इसका derivative with respect to x क्या आएगा? 2x. You can see that here partial m over partial y is 2x and partial n over partial x is 2x. What does it mean? Partial m over partial y is equal to partial n over partial x. Now, what does it mean? It implies that given equation, given ODE is exact ODE. इससे हमें क्या पता चलेगा? Once we know that this equation is exact ODE, then there must exist some function f of xy whose differential is this left hand side. Basically, this thing guarantees us that there must exist some function f of xy. अगर ये exact है तो क्या होगा? If this is exact ODE, then there must exist some function f of xy such that df is what? M dx plus n dy. Means the left hand side of the given equation is the differential of this function. Now, I hope you get it. If you have any question, you can ask me. This criteria basically assure us that there must exist some function of this kind f of xy whose differential is basically the left hand side. Okay, this is the criteria. अगर कोई equation exact differential equation होगी, ये criteria satisfy करेगी, तो then we will move forward to find this kind of function f of xy. अगर ये यहाँ पे ये criteria satisfy नहीं करती, ठीक है, then इस तरह का कोई function exist नहीं करेगा. क्यों? क्योंकि ये necessary and sufficient condition both है, ठीक है. तो आपके पास इस तरह का कोई फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा जो जिसका डिफरेंशियल जो है वो लेफ्ट हैंड साइड होगी. तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं होगी. हम इसको इस टेक्निक से सॉल्व नहीं कर सकते. विल ट्राई सम अदर टेक्निक. नाउ अब हम देखते हैं कि वो f of xy हम कैसे फाइंड करेंगे फॉर दिस.
for this equation. मैंने आपसे कहा था कि remember these two equations. We have to use these two equations. Partial f over partial x is equal to n, and partial f over partial y is equal to n. Equation 3 and 4. We will use these two equations to find f of xy is equal to n. आप इन दोनों में से कोई भी एक चूज कर लें. Partial f over partial x is equal to m, and partial f over partial y is equal to n. ठीक है. This is your equation 3 and 4. दोनों में से कोई एक इक्वेशन आप चूज कर लें. You can start with that equation. Let us start with the first equation. तो आपके पास क्या है? Partial f over partial x is equal to m. What is your m? M is your 2xy. So it is 2xy. Integrating both sides, with respect to x. क्यों? क्योंकि यहाँ पे f का पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x है. अगर इसको रिवर्स करना है आपने तो इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स. सो इट इज पार्शियल f ओवर पार्शियल x इंटीग्रल dx is equal to integral 2xy dx. यहाँ पे डेरिवेटिव और इंटीग्रल कैंसिल हो जाएंगे. व्हाट डू यू गेट हियर? What do you get here? F of xy is equal to, यहाँ पे जब आप डेरिवेटिव सॉरी इंटीग्रल लेंगे रिस्पेक्ट टू x, y एज अ कांस्टेंट ट्रीट होगा. यहाँ पे 2y बाहर आ जाएगा. इंटीग्रल x dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. ठीक है. अब यहाँ पे देखिए हमने y को एज अ कांस्टेंट ट्रीट किया है. यहाँ पे तो y अगर हम यहाँ पे कांस्टेंट ट्रीट करेंगे तो पार्शियल डेरिवेटिव्स की जब हम इंटीग्रेशन करते हैं तो यहाँ पे जिस वेरिएबल को आपने कांस्टेंट लिखा है, कांस्टेंट ट्रीट किया है, यहाँ पे जो कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन होगा वो बेसिकली फंक्शन होगा उस वेरिएबल का. इट मेक्स सेंस. क्यों? क्योंकि अगर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस मे बी y 2y क्यूब लिखो, आप डेरिवेटिव लेंगे यहाँ पे विद रिस्पेक्ट टू x, पार्शियल डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. अगर इसका लें आप, अगर आपके पास ये f ऑफ xy है, इसका पार्शियल f और पार्शियल y सॉरी x अगर आप लें तो आपके पास यहाँ पे x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, y को कांस्टेंट ट्रीट किया आपने, ये पूरा फंक्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा. तो जब इसको इंटीग्रेट करेंगे वापस f लाने के लिए तो आप यहाँ पे इसको एज ए इंटीग्रेशन कांस्टेंट ट्रीट करेंगे. और ये इंटीग्रेशन कांस्टेंट क्या है? इट इज बेसिकली अ फंक्शन ऑफ y. आई होप यू गेट इट. इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी. तो जब भी आप पार्शियल डेरिवेटिव्स की इंटीग्रेशन करते हैं तो उसमें कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन कैसे ऐड करते हैं? इट इज नॉट सिंपल कांस्टेंट. It is basically the constant which is actually the function of that variable which is being treated as a constant variable. ठीक है. तो यहाँ पे हमने h of y एक function introduce किया. It is basically here a constant of integration. अब यहाँ आपके पास इसका अगर हम इंटीग्रल लें तो ये क्या आ जाएगा? 2y x का इंटीग्रल x square by 2 plus h of y. तो ये 2 और 2 कैंसिल हो गए. आपके पास क्या आ गया? x स्क्वायर y प्लस h ऑफ y और यहाँ पे f ऑफ xy. ठीक है. अब आपके पास ये फंक्शन आ गया f ऑफ xy, x स्क्वायर प्लस y. लेकिन प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे? यहाँ पे ये फंक्शन अननोन है अभी. वी नीड टू नो इट, वी नीड टू फाइंड इट. ठीक है.
In order to find this thing, this unknown function which we have added here as a constant of integration, in order to find this function, we will use the second equation. हमने स्टार्ट किया था फर्स्ट से, सेकंड को हमने यूज नहीं किया, ठीक है. अब in order to find this unknown function, we are going to use the second equation. सेकेंड इक्वेशन यूज करने के लिए हमारे पास क्या है, पार्शियल एफ और पार्शियल वाई इज इक्वल टू एन. अब हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स वाई. अगर हम इसका पार्शियल डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू वाई, तो फिर उसको हम एन के इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है. सो लेट्स टेक द पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ दिस थिंग विद रिस्पेक्ट टू एन. नाउ लेट मी write this thing here. Now f of x y is what? It is x square y plus h of y. Now differentiating this thing with respect to partial f और partial y respect to y. तो आपके पास क्या आ जाएगा, partial f और partial y is equal to what? अब इसमें x को आपने कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो y का डेरिवेटिव 1 आ जाएगा, यहाँ पे x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, प्लस इसका पार्शियल डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y, क्योंकि ये सिर्फ फंक्शन ऑफ y है, तो इसका डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू y h डैश ऑफ y हो जाएगा, ठीक है, या आप इसको dh by dy लिख सकते हैं. नाउ बाय यूजिंग द सेकंड इक्वेशन, यूजिंग partial f or partial y is equal to n. Now this thing can be written as what? n हमें पता है कि n क्या है, यहाँ पे given equation में n क्या था, x square minus 1 था, ठीक है. So this thing can be written as x square plus h dash of y is equal to x square minus 1. सर क्विज स्टार्ट हो गया. Quiz? क्या हो गया? इसका टाइम स्टार्ट हो गया. चलिए कोई बात नहीं. Let me finish it in a couple of minutes and then we shall start the quiz. Now this thing is equal to this thing. आप देखिए यहाँ पे x square cancel हो गया. What do we get here? H dash of y is equal to minus 1. अब आप इसको इंटीग्रेट करें with respect to y, ठीक है. Integrating with respect to y. अब ये सिंपल फंक्शन ऑफ y है, ठीक है, dh by dy. तो dh by dy को इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू y, माइनस 1 को इंटीग्रेट करेंगे रिस्पेक्ट टू y, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, माइनस y, और इधर क्या आ जाएगा, h of y, ठीक है. h of y आपके पास इसकी वैल्यू आ गई. आपके पास f of x y में क्या चीज अननोन थी, h of y. h of y की वैल्यू हमने फाइंड कर ली, विच इज बेसिकली माइनस y. यहां पे आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर भी सकते हैं, इट डजंट मैटर, आप यहां पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन ऐड कर लें, ठीक है. तो आपके पास यहां पे फंक्शन जो है आपके पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई प्लस माइनस h of y की वैल्यू माइनस y प्लस सम कांस्टेंट c1. तो आपके पास जो फंक्शन है f of x y, इसकी वैल्यू क्या आ गई. Therefore we have calculated f of x y is equal to x square y minus y plus c1. अब आप इसको यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लिखें या ना लिखें, इसको अगर आप इक्वल टू कांस्टेंट पुट करेंगे तो वो आपका सोल्यूशन होगा.
तो अगर इसको इक्वल टू सी लिखें तो ये सी उधर जाके बेसिकली आपके पास अगेन एक नया सी आ जाएगा, एक्स स्क्वायर वाई माइनस वाई इज इक्वल टू मे बी सी नॉट. सो दिस इज योर सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल. अब अगर आप इसका डिफरेंशियल लें तो आपके पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी वो आनी चाहिए. ओरिजिनल इक्वेशन इज व्हाट? इट इज 2xy dx x square minus 1 dy. अगर आप देखें इसका डिफरेंशियल लें रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव लें तो क्या आएगा? 2xy इसका 0 हो जाएगा, ठीक है. और जब रिस्पेक्ट टू y डेरिवेटिव लेंगे तो x स्क्वायर कांस्टेंट इसका 1 माइनस y का 1. So you get this thing. So the differential of this function is the left hand side of this equation. So this was basically the procedure of finding the solution of an exact differential equation. If you have any question, you can ask me. Otherwise, we are going to start the quiz. So in today's lecture, I shall upload 2 recordings. Okay, light was gone. You can start the quiz. Let me turn off the video recording.